एक मेरी आई जो कैप्चर कर रहा है वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप कैन बी अ गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस एंड आई विल मार्क दिस एज ग्रे ताकि हमारे रेफरेंस पॉइंट में हमें याद रहे ये एज वी कैन सी प्राइस हैज टेकन सम 1 मिनट लो अराउंड है और हम एक अप मूव देख रहे हैं यहाँ पर एंड आई थिंक आई शुड एंटर हेयर और ऑप्शन चेन में हमें कॉल का मौका मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पे हाउ मच इज इट it's 80 points. I think I should buy one lot. Okay, so I've bought one lot. I'll put my stop loss. एक तो यार मैं इसको राइट पे कर देता हूँ। मुझे एक्सटेंडेड लाइंस कर देता हूँ यार, थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम होती है वरना। ठीक है, ये रहा। और अभी हमारा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स। तो 48 इंटू 15 कितना होता है भाई? That is somewhere around 720 rupees. All right. We can see price going to the upside. अब प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा we will buy another lot. ठीक है, no need to worry about it. We'll just wait clearly and look for it. Okay, so price has come into this fair value gap, so we will buy one more. थोड़ा सा एक न्यू टैब, डुप्लीकेट टैब, यहाँ पे थोड़ा सा हम निफ्टी में भी नजर डालते हैं कि बहुत लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है, ऊपर को तेज़ है। So we can see that unfolding here if price takes this out. Okay, so we are expanding lower inside the gap, I think. Yes, we are expanding lower, but still we are inside this fair value gap and अभी भी कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आएंगे, load layout Nifty. Okay, so Nifty right from the start is expanding lower as we can see. Okay, okay, so there is some expansion to the upside. यहाँ पे जो ये निफ्टी कंटिन्यूस लोअर एक्सपेंशन हो रही है, दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट राइट नाउ। यहाँ से आपको एक चाहिए अपसाइड मोमेंटम प्राइस में, तभी कुछ हो सकता है। इफ इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग लोअर देन वी आर प्रोबेबली हेडिंग फॉर सम स्टॉप लॉस। ये हो गया आपका एनडीओजी, सॉरी ये यहाँ से होगा ये। आई थिंक वी शुड हैव वेटेड फॉर सम सॉर्ट ऑफ ट्रिगर, आई गेस मे बी एक अनदर लिक्विडिटी रन का हम लोग वेट कर सकते थे फॉर प्राइस टू टेक दिस आउट। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये है ओके, सो वी हैव सीन प्राइस टेकिंग आउट दिस पूल ऑफ लिक्विडिटी। ओके, सो वी माइट बी हेडिंग लोअर डेफिनेटली एंड हमने गलत एंटर कर लिया यहाँ पे। आई थिंक वी शुड एक्सिट दिस ट्रेड राइट नाउ एंड अभी हम स्टिल इस फेयर वैल्यू गैप में हैं जस्ट बाय द वे। Okay, so this is what we want to see. We want price, want to see price expand from this fair value gap. We've seen this liquidity run on 1 minute, bottom, center, and we've seen the market structure shift and price respecting this fair value gap as of now.
This would be our first partial. Price entering here would be our first partial, and then we'll see afterwards where price wants to go. And as we can see here, there is some sort of liquidity that has been taken by price. Okay, okay. Hmm. Let's see here. So we are seeing expansion to the upside. We want to see rapid expansion to the upside in this fair value gap. If you're not able to see that, so we'll look at the possibility of canceling this trade. So we are seeing a powerful expansion here. And it's also important to look at this high as well. This, oh, sorry, 2x. I want to see powerful expansion into this 15-minute fair value gap. That is what I want to see as a trader right now. And rel would be a very, very long shot considering the fact that we had some sort of what, uh, kind of, what do you say, is what do you call it? Some sort of loss yesterday. That is also very important. अभी मैं stop loss order थोड़ा सा cancel करूंगा क्योंकि trade exit करने के लिए मैं अभी have to cancel the stop loss order if we want to exit the position. My market somewhere around here is where. Okay, so we've seen the expansion to the upside here as well. We are seeing this in the price. इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं यूजुअली लगाता नहीं हूँ क्योंकि फिर आपका सारा फोकस जो है ना वो आरआर पे चला जाता है आपका सारा फोकस. यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी फॉर द प्राइस मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सपैंड टू द अपसाइड. अब इसने वो दिखा दिया विलिंगनेस टू गो टू द अपसाइड. सो this is pretty much that we will be content with. In terms of first partial, yes, we have to take that. I agree. Pehla partial should be the low hanging fruit. That I agree with you guys. If it expands with power inside the 15-minute fair value up, that would be very, very good for us. But I think it will first go and have this fair value gap filled. Can, if does not, then very good for us. That means we're heavily, heavily bearish. Let's remove this for a moment. Let's also remove this for a moment. Okay, so here can be our second stage of entry. This is the second stage of accumulation, not extend, right? Quadrants that we have to see. गेट बंद कर देना नानी. I think the price is probably heading for this relative equal highs, in my opinion, because these highs are like they are like very, 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 very clean, and if I mark them, it will be very good. Ray,
We can see we have kind of left the gap, right? As you can see, we've left the gap. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने गैप को छोड़ दिया है, स्पेशली उसके 50% प्राइस पॉइंट से भी नीचे टच करे बिना, तो दैट इज लाइक वेरी 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 गुड। दैट मीन्स we are on the right side of the marketplace, and matlab it gives us more confirmation. Not necessarily we are on the right side, we can be wrong still, right? See, this is what I'm talking about. These kind of things is what I'm talking about essentially. This happens all the time. You see, all the profits stripping out, and when you see lower expansions like these, that means it's probably your time to right exit, right? And this is price taking this high, and if it gives a market structure shift, then we probably are on the wrong side and might have to exit the trade, right? तो अभी तो फिर फिलहाल let's put our stop loss back in the trade, क्योंकि अभी भी I don't think कि अभी हमें मौका मिलेगा exit करने का. Okay, I guess my phone is ringing. One minute, I might be calling. Okay, so price has taken this liquidity and expanded to the upside again. All right. I think this is a very important demarcation for price in terms of where it wants to expand. But let's focus on Bank Nifty. Abhi hamara trade idea hasn't collapsed yet, so we are still in this trade. But this expansion to the upside speaks a lot about like us being on side. Mhm. This is what I'm probably talking about. Yes. मॉर्निंग सेशन का फायदा यही है एक्चुअल में। यू सी रैपिड मूवमेंट्स, तो आइदर आपका स्टॉप लॉस भी जल्दी हिट हो जाएगा, फिर आपका टारगेट भी हो जाएगा, राइट? और मैं तो चाहता हूँ भाई ये पूरा ही कैप्चर हो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, और जहां तक मेरा अनुमान है ना ये होगा भी, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल हाइज दे आर लाइक वेरी 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 क्लीन यार। यहाँ पर प्राइस एक्सपैंडेड अबव दिस, बट फ्यूचर्स में इट इज नॉट एक्सपैंडिंग अबव। आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर द प्राइस टू हेड देयर, इनसाइड दिस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऊपर जाके फिर से ही रुक जाता है ये। We have a fair value gap inside of a fair value gap. We can see here. इसको मैं let me turn this blue. See, anyway, we want the price to stay above this 15-minute high. If it continues to stay above this 15-minute high, we are good to go inside this trade. A quick जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, उसमें जो आपके क्विक प्रॉफिट्स हो जाते हैं ना, जब कभी कभार 3-4 बार आपको इतनी गंदी आदत लग जाती है, यू डोंट रियलाइज कि कभी कभार ट्रेड में 1-1 1.5-1.5 घंटा भी बैठना पड़ता है।
और जब प्राइस यहाँ पे इतनी पास हो ना प्रॉफिट्स में, दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू, कि इतनी पास है मेरे डेस्टिनेशन की, तब भी प्राइस लाइक जा नहीं रहा। बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, सिंस जब तक आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो कर रहे हो ना, देयर इज नथिंग फॉर यू टू वरी अबाउट एक्चुअली, नथिंग एक्चुअली फॉर यू टू वरी अबाउट। क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया है, 43 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, यू गो एंड यू कैलकुलेट 43 इंटू 30, आपका 1290 रुपए का ट्रेड ये ऐसे है। तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड द रिस्क, सो देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट जब आपने ऑलरेडी रिस्क कैलकुलेट कर लिया। Here we can see the SMT and बैंक निफ्टी गोइंग डाउन बट निफ्टी कंटिन्यूअसली गोइंग अप। यही यही डाइवर्जेंस हमें कल भी देखने को मिल रही थी प्राइस में ना। स्पेशली आफ्टर अ डे जहाँ पे आपका लॉस हो जाता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इज मच लोअर। आई आई यूज टू थिंक कि जब सारी गेम इसकी है, ट्रेड मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की, तो फिर क्या, बट योर कॉन्फिडेंस इन द ट्रेड drastically reduces. This is what I have experienced, and it's actually very, very, very true if you think about it. This is very true if you think about it. 28 तारीख को मेरा मंथ एंड होता है। अभी हम जस्ट वेटिंग फॉर प्राइस टू एक्सपैंड इनटू द 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, एंड we can get there very well and good. If not, you have to observe price very closely. Right now, it is still respecting bullish arrays. And what is Nifty doing? Nifty has again taken liquidity, and Nifty, if it expands to the upside and give us a pump, क्योंकि आप देखो इस रन में उसने buy side लिया and it has crossed. Okay, so here we might now see some expansion to the upside. Now the movement should be like fast. मेरा stop loss यहाँ था, as you can see. I've removed the stop loss because now I have to exit the trade. Just about to exit the trade. And trust me, like your confidence is affected a lot actually. I'm not making this up. After a day of a loss, confidence पे बहुत impact आता है, बहुत ज़्यादा impact आता है in fact. Okay, so this is exactly what we don't want to see. Price closing below this high. This is what we don't want to see. Uh, okay, yes, exactly. This is exactly what we want to see. The price expanding to the upside. We have exited 15. Now let's wait. Okay, so first profit and the second is at the CE of this trade. All right. कितने आर का बना हमारा ट्रेड? 510, 541, so somewhere around 525 के अराउंड हमारी एवरेज एग्जिट हुई है। 525 के अराउंड एवरेज एग्जिट हुई है। 525 के समवेयर अराउंड 2.5 आर का ट्रेड था ये।
Good for us. Abhi, I expect for price to expand further to the upside, of course, and finally go after these ray if price will. But we have exited, of course. We are going after the low-hanging fruit objectives, I mean.